morning students. Once again, welcome back in maths class. Today again we continue our revision of chapter 7. Okay. So in previous video also we have done revision, half chapter revision in that we have done, and today we will continue. So first of all we will revise lines. So how many type of lines you have? Type of line you already study. Type of line are which? Line, line segment and ray. Now you have lines. So lines are different types. When we have two lines with same gap, okay, when two lines with same gap, two or more, two से ज़्यादा भी हो सकती है, 3 lines, 4 lines with same gap, okay, equidistance, इनके बीच का जो distance है that is equal. On equidistance like railway track, okay, railway line जो होती है that is on equidistance, okay. So these lines are known as parallel lines. इन lines को हम बोलते हैं parallel lines. P-A-R-A-L-L-E-L, parallel lines, because more than one, so we call them lines. So these lines are known as parallel lines. Parallel lines का symbol क्या होता है? Like 11. This is the symbol of parallel lines. Clear? After that we have intersecting lines. When two lines cross each other, जब two lines एक दूसरे को cross करती है, so that lines are known as intersecting lines. Like this, you have X. So these are the intersecting lines. Okay? These are the intersecting lines. Clear? Now after that we have perpendicular lines. Perpendicular lines are which? When two lines cross each other at 90 degree. एक दूसरे को 90 डिग्री पे ऐसे two lines है यहाँ पे, they are crossing on, okay, they are crossing on 90 degree. इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. So these are the perpendicular line. This is also, जैसे आपके पास, this is also perpendicular line. If you have like this, these are also perpendicular lines. So these are known as, these are the rays. अब इसमें ये line segment है आपके पास, and these are rays. There is two rays. These are perpendicular on each other. Okay. So these are known as perpendicular lines. Clear? Perpendicular when we have two lines intersect at 90 degree. जब two lines जो है 90 degree पे intersect करती है, so that is known as perpendicular lines. And when they cross each other, normally cross करती है, अगर 90 का एंगल नहीं बनता है, so then they are known as intersecting. But when they cross at 90 degree, जब ये 90 degree पे cross करती है, so that is known as perpendicular line. Okay? तो perpendicular होती है जब 90 degree पे, and intersecting when we don't have 90 degree angle. And parallel when they never cross, जब कभी भी cross नहीं करती है, so that are known as parallel lines. Clear? ये आपके पास हो गया type of lines. Now after that what we have? Polygons. So what is polygon? Polygon, a closed figure, okay, made up with 3 or more line segment that do not cross, जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ओके, जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी. जैसे आपके पास है this, okay, this is also with 4 line segment. This is also, if you have like this, they are not crossing, so this is also a polygon. Okay, when they do not cross नहीं करे, made up a closed figure made up with a line segment. This is made up with 1, 2, 3 line segment. This is made up with 1, 2, 3, 4 line segment. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 line segment. So when a figure made up with line segment, a closed figure, and then do not cross each other. Suppose you have like this. Suppose आपके पास ऐसा है. This is also made up with line segment. ये भी 4 line segment से बना है आपके पास. मैंने यहाँ से start किया 1, 2, 3, 4.
but this is not a polygon. Why? Because this is crossing to each other. ये lines जो है ये एक दूसरे को cross कर रही है. That means this is not a polygon. When they cross, that is not a polygon. Okay, so polygon is a simple closed figure made up with a line segment, and the line segment do not cross each other. एक दूसरे को cross नहीं करें. Clear? After that we polygons. So now different type of polygons. So a polygon made up with 3 line segment, जो 3 line segment से बनता है, that is known as triangle. This is known as triangle. ये 3 line segment से बन रहा है, so this is triangle. Now after that a polygon made up with 4 line segment, जो 4 line segment से बनता है, what we call that? Quadrilateral. What we call that? Quadrilateral. जो आपके पास square, rectangle, kite, parallelogram, okay, rhombus. These are the different types of quadrilateral. ये quadrilateral के type है. Okay, a figure made up with 4 line segments is known as quadrilateral. Then after that, with 5 line segments is known as pentagon. With 6 line segments, a closed figure made up with 6 line segment is known as hexagon. With 7 line segment, heptagon. With 8 line segment, octagon. With 9 line segment, nonagon. And with 10 line segment, decagon. Okay, so these are the different type of polygons. After that we have next topic is triangle. Okay, next our topic is triangle. So triangle, as you know, a closed, yeah, we can say that a polygon made up with 3 line segment. A polygon made up with 3 line segment is known as triangle. एक polygon जो 3 line segment से बनता है, 1, 2, 3. That is known as what? Triangle. Okay. So in a triangle, as we know by the name से ही हमें पता चल रहा है triangle. Triangle को जब हम break करते हैं, so it's become triangle. Triangle means tri means 3. Angle means angle जिसमें बनते हैं. So triangle means triangle. In triangle we have 3 angles. 1, 2, 3. Clear? 3 angles, 3 vertices. 1, 2, 3. And 3 sides. 1, 2, 3. Okay? 3 sides होते हैं in a triangle. 3 sides, 3 vertices, and 3 angles. Clear? In a triangle, 3 sides, 3 vertices, and 3 angles. Now, type of triangles. Different type of triangles we have. We have 3 types of triangle according to sides and 3 types of triangle according to the angles. We classify the triangle according to the sides and according to the angles. Okay? Classify मतलब होता है पहचानना. जो हम triangles की पहचान करते हैं वो हम sides के according करते हैं और हम angles के according करते हैं. According to the side we have 3 types of triangle. जो side है उसके according हमारे पास 3 types की triangle होती है. कैसे होती है? If we have all sides equal, अगर किसी triangle में all sides equal है आपके पास, suppose a triangle with all sides equal, okay? ऐसे आपके पास suppose all sides equal है, so that is known as equilateral triangle. जिसमें सभी all 3 sides equal है, that is known as equilateral triangles. If you have 2 sides equal, this is suppose ये upside वाली 2 side equal है and third one is different, like this you have, suppose you have like this, okay? So these two are equal and this is different. ये आपकी जो है ये different है. So that means this is known as isosceles triangle.
sides are equal and one side is different, चाहे वो टू कोई भी हो सकती है, this and this are equal and this one is small. So if these two are equal, whenever you have two sides are equal, जब भी two sides equal है, so that is known as isosceles triangle. चाहे वो टू कोई भी हो सकती है, बेस वाली टॉप वाली हो सकती है, one base one side, one base one this side, any two sides, कोई भी two sides equal होती है, so that is known as isosceles triangle. Then third one is scalar triangle. When all three sides are different, जब all three sides different होती है आपके पास, so suppose you have like this, okay, all three sides are you are getting different, so this is known as scalar triangle, जिसमें all three sides क्या है, different. So this is scalar triangle whenever you have all three sides are different. Clear? Now according to the angles, अब आपके पास आती है एंगल्स के अकॉर्डिंग, ये तो थी आपके पास साइड्स के अकॉर्डिंग, साइड्स के अकॉर्डिंग हो गई आपके पास, साइड्स के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स, ओके, आई हैव टोल्ड यू साइड्स के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स कौन कौन सी होगी, आइसोसेलेस, स्केलर और इक्विलेटरल. क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, according to the angles, according to the angles also we have three types, which are this, कौन कौन सी है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होती है acute triangle, we can use symbol also, triangle symbol, okay, this is the symbol of triangle, acute triangle. In acute triangle what we have, all angles are acute, सारे जो आपके एंगल है वो acute रहते हैं. acute कैसे, means less than 90 degree. When you have the angle less than 90 degree, so that angle is known as acute angle. तो आपके पास acute triangle में क्या होते हैं, all angles are acute. acute means less than 90 degree. अब यहाँ पे सारे 90 से लेस है, 90 से लेस का मतलब L शेप से डाउन, L शेप आपके पास 90 होती है, तो L शेप से जब डाउन होते हैं आपके पास, so जब ऐसे V शेप में, okay, so that all are acute angle, okay, जो 90 से लेस होते हैं all are acute. So this is acute triangle. Clear? After that you have acute triangle के बाद आपके पास next आती है right triangle. Right triangle means a triangle in which one angle is 90 degree. जिसमें one angle आपका कैसा हो, 90 डिग्री, वो चाहे इधर वाला हो ऐसे, अब ये 90 आ गया, 90 ओनली वन एक्यूट हो, सॉरी वन राइट हो सकता है, राइट ट्रायंगल में आपके पास ओनली वन राइट, एक्यूट में तो ऑल थ्री एक्यूट होने चाहिए, ओके, एक्यूट में तो ऑल थ्री एक्यूट होंगे, बट राइट में ओनली वन एंगल विल बी राइट, टू राइट नहीं हो सकती. व्हाई? बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. जो थ्री एंगल्स का सम है वो आपके पास 180 डिग्री होता है. अब अगर टू राइट हो गए, टू एंगल आपके 90 हो गए, तो टू एंगल का सम ही 90 डिग्री हो जाएगा. अब थर्ड एंगल तो मिलेगा ही नहीं, इनका ही सम हो गया 180. अब थर्ड क्या हो गया, 0, और ऐसा तो हो नहीं सकता 0 एंगल, तो फिर ट्रायंगल ही नहीं बनेगी. ओके, सो दैट मीन्स इन अ ट्रायंगल वी कांट हैव टू राइट एंगल. सो राइट ट्रायंगल में क्या होता है, वन एंगल 90 डिग्री. वो 90 डिग्री चाहे कोई सा भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, देयर इज ऑल्सो हियर. ओके, यहाँ पे 90 डिग्री हो, दिस वन टॉप वाला भी हो सकता है, एनी वन. ओके, एनी वन इज 90 डिग्री, सो दैट इज राइट ट्रायंगल. देन आफ्टर दैट वी हैव obtuse triangle. In obtuse triangle what we have, one angle is more than 90 degree. obtuse भी सिर्फ वन ही होता है, अदर टू acute होते हैं, राइट में भी अदर टू acute होते हैं, obtuse में भी अदर टू acute होते हैं, only one is obtuse. obtuse means more than 90, like this we have, this is obtuse triangle. this one also we can have, इधर वाला भी आपका 90 से बिग हो सकता है, ऐसे भी बन सकती है. ओके, means one angle is more than 90 degree. Whenever you have one angle more than 90 degree, so that is obtuse angle.
So that triangle is known as obtuse angle triangle. Here we can say that obtuse triangle. Clear? So these are the type of triangle. After that we have circle. Next is circle. Now circle is what? A closed figure. This is also a closed figure made up with curved line. Okay, not with straight line, curved line. That's why this is not a polygon. क्योंकि कर्व लाइन से बनता है, so this is not a polygon. ये polygon नहीं है. Okay, so this is circle. Okay, in circle we have a center because circle we make with compass. Actually we can make a bangle also, other circular object जो भी घर पे जैसे हम ग्लास वगैरह से other circular object से भी हम बना सकते हैं, but actually उसमें हमें सेंटर फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है. सो प्रॉपरली हम सर्कल किससे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंपास. कंपास की हेल्प से हम सर्कल बनाते हैं. दैट यू नो वेरी वेल, यू हैव डन इन क्लास 4th आल्सो. ओके, सो इन सर्कल व्हाट वी हैव दिस फिक्स पॉइंट वेयर वी पुट कंपास टिप. जो कंपास की मेटल टिप जो रखते हैं दैट इज सेंटर. ये क्या होता है आपका? सेंटर ऑफ द सर्कल. इसे हम बोलते हैं सेंटर. In a circle we have only one center. Okay, and all the points are on equidistance. जो सर्कल के सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. Okay, so in circle we have one center and the distance from center to circumference is known as radius. इसे हम क्या बोलते हैं? Radius. Distance from center to circumference. सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस. ओके, अ लाइन सेगमेंट व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड टच टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल मींस रेडियस से डबल. सर्कल के 2 पॉइंट्स को, ये आपके पास हो गए रेडियस सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, बट अगेन ये सर्कमफ्रेंस पे टच कर रही है. अ लाइन सेगमेंट स्टार्ट फ्रॉम सर्कमफ्रेंस पासिंग थ्रू द सेंटर अगेन टचिंग द सर्कमफ्रेंस means double of radius, 2 radius. अब इसमें कितनी रेडियस होगी? 2, 1 this and 1 is this. So 2 radius make 1 diameter. Okay, so this is known as diameter. Clear? After diameter we have chord. After diameter we have chord. Chord क्या होता है? What is chord? A line segment passing through the center. No, in chord it is not necessary. किसमें necessary होता है? ये diameter में. Okay, diameter में हमारे पास क्या होता है? passing through the center. but chord में हमारे पास it is not necessary. अगर ये आपके पास center से होके जा रहा है तो भी chord है, नहीं होके जा रहा तो भी chord है. Okay, so a line segment that touch 2 points of the circle. जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे, सिर्फ वो चाहे यहां से हो गई, चाहे वो यहां से हो गई, चाहे वो ये हो गई, all are the chord means that touch 2 point on the circle. सेंटर से होके जा रही तो बेस्ट है, वो क्या हो गया? सबसे बड़ा chord हो गया. That's why we call that diameter because that is the longest chord, सबसे बड़ा chord. So that's why we call that a diameter. We give it special name diameter. Okay, and the rest are known as chord. और सारे जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करते हैं that line segment is known as chord. Clear? After chord we have semicircle. Semicircle क्या होता है? हाफ ऑफ सर्कल. जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 सेमीसर्कल्स में डिवाइड करता है. ये आपका डायमीटर है. दिस इज आल्सो डायमीटर. So it is dividing a circle into 2 equal part. One is this and one is this. So this हाफ पार्ट, जो हाफ सर्कल है ऐसा आपका, जो हाफ पार्ट है दिस इज नोन एज सेमी सर्कल. इन अ सर्कल वी हैव 2 सेमी सर्कल, one upside, one downside. So half of circle is known as semi circle. After that arc. Arc क्या होता है? Arc part of circle. सर्कल का छोटा सा जो पार्ट होता है, जैसे हम एंगल में आर्क बनाते हैं, हमने एंगल बनाया, इसके बीच में हम क्या बनाते हैं? दिस इज नोन एज आर्क बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कल. सर्कल का छोटा सा पार्ट
is known as arc. Okay, we give name arc by the 3 letters. जो arc है हम उसको 3 letters से name देते हैं, जैसे A, यहाँ पे हमने दे दिया B and there is C. So its name become A, B, C and on this arc symbol. Okay, so arc we give name by 3 letters and arc is the part of circle. So these are the different parts of the circle. In a circle we can make infinite radius. Radius भी हम infinite बना सकते हैं, जैसे हमने circle बनाया, इसमें हम कितने भी radius बना सकते हैं, this. Okay, there is infinite number of radius. Diameter also infinite. Okay, diameter भी जैसे हमने circle बनाया, इसमें हम यहाँ पे ही आपका है center, तो कितने diameter बना दो इस. Okay, infinite number of diameter and chord also infinite. 3 things है जो infinite होती है, radius, diameter and chord. ये हम कितने भी बना सकते हैं सर्कल में, बट जो सेंटर होता है that is only 1. Clear? Semicircle 2. In a circle we have 2 semicircle. Okay, one thing more left, which is that the boundary of circle. Boundary of circle is known as circumference. जो बाउंड्री होती है सर्कल की उसे हम क्या बोलते हैं, circumference. Okay, and diameter equals to twice of radius, 2r, और radius क्या होगी, half of diameter divided by 2, diameter की half. Okay, now your complete chapter revision is done, so you revise complete chapter. Thank you.